Good morning, dear student. BCom semester 3 English medium. Dear students, in our previous lectures we calculate the example number for 5 and 6. Now, in this lectures we calculate the another two examples. Example number 7. You can see on your mobile screen. Example number 7. Calculate the normal and overtime wages payable to workmen from the following data. Dear students, here is the data for the workmen's who was working Monday to Saturday in one company and total number of hours per day. So friends, you can see here days and hours worked. So on Monday he was worked 8 hours, Tuesday he was worked 10 hours, Wednesday he was worked 9 hours, Thursday he worked 11 hours, Friday he worked 9 hours, and Saturday he works 4 hours. Total per week he work 51 hours. Now the additional information, the normal working hours 8 hours per day means the per day minimum या standard time of work is 8 hours. Now normal rate 0.50 per hour means कि if you work 8 hours then the company will pay 50 paisa per hour. Overtime rate up to 9 hours in a day at a single rate and over 9 hours in a day at a double rate. Means suppose ke you work 9 hours and more up to 8 to 9 hours, then you get a single rate, and you work more than 9 hours, the company charge double to pay, or up to 48 hours in a week at a single rate and over 48 hours at a double rate, whichever is more beneficial to workmen. Suppose which are the beneficial to workers, the company would pay. Okay, so now friends, this type of example asked in your university exam or internal exam to how to start your calculation. This is a very easy example. First you decide how to start. So you make some image in your mind and prepare a table, suppose which informations we want to collect. So first we make days, then after working hours, normal working hours, then after single rate and double rate. So friends, you can see here I make the table. Suppose के days working hours, this is the working hours which are given our information. Then after normal working hours यानी कि means per day. Then after overtime. So there are two conditions. One is single rate and second is double rate. So Monday to Saturday. So working hours which are given in our information. So 8, 10, 9, 11, 9, 4. So we note down here 8, 10, 9, 11, 9, 4. Total 51 hours. Now normal यानी कि per day 8 hours. So 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Okay. So total 44 hours. The workers work as a normal working days. Now on Monday the workers working hours 8 and normal working hours 8. There is no any overtime. Tuesday 10 hours. The workers made 2 hours overtime, but the condition up to 9 hours he would pay single rate and more than 9 he would pay to double rate. So 1 hour is a single and 1 hour is a double rate. On Wednesday work 9, so normal working 8 यानी कि 1 hours made overtime, so single rate and double rate is 0. Thursday 11, so there are 8 hour working, so 1 hour is a single and 2 hours is a double rate. Friday 9 hours, so 1 is a single rate. Saturday he worked only 4 hours, so there is no any overtime or no any single or double rate. Now normal working days working hours of 44. Now single rate to 1, 2, 3, 4, तो 4 and double rate to 1, 2 यानी कि 3. So the workers normal
wages 44 hours, single rate 4 hours and double rate 3 hours. Now normal wages तो 44 आवर्स मल्टीप्लाई 0.50 यानी कि 22 रुपीज़. सिंगल रेट वेज तो 4 आवर्स मल्टीप्लाई 0.50 इज इक्वल टू 2 रुपीज़. देन डबल रेट वेज इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3 रुपीज़. सो टोटल वेज 22 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 25 रुपीज़. सो फ्रेंड्स, this is the complete our example number 7 and I hope you understand all the calculations. Now I am going to another example and this is a very important example opening by me. So example number 10. So when I read the information related to our example, Manish has taken 20 hours to complete a job. The wage rate per hour is rupees 8. If he has received rupees 192 as a total wages according to the Rowan plan, what would be the amount of wages earned by him according to the Halsey plan and Pease wage plan? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला गया है कि मनीष नाम का जो एक वर्कर्स है वो 20 आवर्स काम करके 20 आवर्स में एक जॉब अपना काम जो वो कंप्लीट कर देता है और जो पर हावर उसको रेट कितना मिलता है 8 रुपीज़ और उसके मुताबिक उसको 192 रुपीज़ उसको वेज मिलता है. कौन सी मेथड के अकॉर्डिंग? तो रोवेन प्लान के मुताबिक. अब हमें क्या करना है कि हमें हेल्सी प्लान और पीस वेज जो प्लान है उसके मुताबिक उसका जो वेज है उसको फाइंड आउट करना है. और बहुत ही ये अच्छा एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से. अगर मुझे पेपर सेटर का काम करना हो तो मैं ये एग्जाम्पल 100% आपको मैं एग्जाम्पल में एग्ज़ाम में आपको आस्क करता. सो नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट वी मेक सम नेसेसरी कैलकुलेशंस. सो रोवेन प्लान, तो हियर एज द प्रोवेन स्कीम मनीष गेट्स रुपीज़ 192 पर 20 आवर्स. देयरफॉर वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द सेव टाइम ऑन विच स्टैंडर्ड टाइम कैन बी ऑब्टेन. हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड टाइम और उसने कितना टाइम सेव किया है यानी कि बचाया है उसको फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद ही हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो अब तक हमने कैसे कैलकुलेशन की थी कि सबसे पहले हम उसका टाइम वेज फाइंड आउट करते थे, उसके बाद बोनस और उसके बाद टोटल वेज. अब हमें उल्टा करना होगा. उसका जो फॉर्मूला उसको हमें अब उल्टा करके पूरा जो है वो फाइंड आउट करना होगा, तभी हम उसका आंसर यहाँ पे पा सकें. क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल वेज दे दिया है, उसका कुल जितनी भी कमाई थी वो हमें दे दी गई है, तो उसकी कमाई के आधार पे ही हमें अब काम करना है. तो टाइम वेज उसका होता है रोवेन प्लान के टाइम टेकन मल्टीप्लाई वेज रेट एंड बोनस एक्चुअल टाइम वेज मल्टीप्लाई टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउ. सो टोटल वेज इज इक्वल टू टाइम वेज प्लस बोनस. तो इसका फॉर्मूला है, हमें इस तरह से फाइंड आउट करना है. तो इसको हम अब जरा सा क्लासीफाई कर लेते हैं. तो वेजेस इज इक्वल टू टाइम वेज मल्टीप्लाई वेज रेट प्लस एक्चुअल टाइम वेज मल्टीप्लाई टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउ. ओके, तो हमारा वेज कितना है 192 इज इक्वल टू अब 20 मल्टीप्लाई 8 प्लस यानी कि काउंट्स इनटू ब्रैकेट 20 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउ बिकॉज वी डू नॉट नो. So 192 is equal to 160 plus into bracket 160 time save upon time allow. Now make the classification. So 192 minus 160 is equal to into bracket 160 multiply time save upon time allow. So 32 is equal to 160 time save time allow. Now change the side. So time save upon time allow is equal to 32 upon 160. So time save upon time allow is 1 upon 5. So total time is 5 hours and we save 1 hour. So standard time 5 hours and save time is 1 hour. So we use time 4 hours. So if use time 4 hours, so standard time is equal to 5 hours. So used time is 20 hours, standard time is question mark. So 20 multiply 5 upon 4 यानी कि 25 hours. Total allow time is 25 hours and we use 20 hours. Okay friends, so now the standard time is 25 hours.
Now this is a easy to us. Number one, piece waste is equal to time allow multiply rate of per hour. So 25 hours multiply per hour 8 यानी कि 200 rupees according to piece waste plan. Manish gets 200 rupees waste. Now healthy plan, the formula is earning is equal to time taken multiply rate per hours plus 50 upon 100 into bracket so 50 upon 100 into bracket time save multiply per hour rate. So time taken तो 20 hours and per hour paid 8 rupees plus 50 upon 100 multiply time save. तो total standard time is 25 and we use 20 यानी कि 5 hours we save multiply 8. So 160 plus 50 upon 100 into bracket 40. So 160 plus 20 is equal to 180 hours, 180 rupees. So according by to Rowan plan, Manish gets 192, piece waste plan 200 and healthy plan 180 rupees the direct wages. Okay friends, so here is complete our two example number 7 and 10. In next lectures we will discuss another example. Thank you. Jai Hind.